Namaskar. Welcome to Vandana's art classes. Today we are going to paint one Ganesha acrylic pouring work done on a canvas. To make Ganesha, first we will draw on a drawing sheet. So from the top on A3 sheet, I have left 3 centimeter. Then I have drawn a line bisecting the paper. You can fold your paper and you can find the midline. Just draw a line for your reference. Later on we will erase it. So first we have left 3 centimeter from the top. Then after that 12 centimeter will be our first mark. That is for the crown or kiritam. Then next 12 centimeter is for the face and around 10.5 is for the trunk. On the top and in the middle, I'm going to use grid method. Where we have marked first point of 12 centimeter, we are marking 6 centimeter on the left and 6 centimeter on the right. At the end of this, that means at 24 centimeter, again we will draw 6 on the left and 6 centimeter on the right. We'll make a square. Now we are going to divide this square into small pieces. As you can see in the diagram, I have made each small square 2 centimeter into 2 centimeter. Vertical lines, I am extending them up so that my crown will have proper distances. ग्रिड में आप देखिए कि मैंने आई कहाँ से शुरू करी है और पहले हम आईलिड बनाएंगे सबसे पहले, फिर हम आईज बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम ट्रंक शुरू करेंगे, फिर हम लेफ्ट और राइट टीथ बनाएंगे और ट्रंक को नीचे लाकर अच्छी तरह उसमें कर्व दीजिए एंड मेक श्योर कि पूरी ट्रंक का शेप सही आए. इस 12 सेंटीमीटर ग्रिड के दोनों साइड 4 या 5 सेंटीमीटर की लाइंस और ड्रॉ करिए और उनके भी आप रेक्टेंगल्स बना लीजिए. ये रेक्टेंगल्स हमारे ईयर्स के लिए हैं. तो आप देखेंगे मेरी ड्राइंग में मैंने ईयर्स को 0 से शुरू करा है और जो 4th ब्लॉक आ रहा है उसमें उनको फिनिश कर दिया है दोनों साइड. That is how we have prepared our basic drawing. Now, once your drawing is correct, keep it at some distance and observe it again and again. When you are sure that everything is on the right place, then take the white carbon, yellow carbon, and transfer it on your desired canvas or the thick paper sheet or wherever you want to paint it. I'm transferring it on the canvas on which I have already done acrylic pouring. Before tracing, before transferring it on the canvas, again make sure that you are leaving equal distance on all the sides. And then after tracing, draw it again in pencil and then actual painting will start.
फ्रेंड्स, गणेश जी के दांतों के विषय में अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनका लेफ्ट टूथ उन्होंने तोड़ा था जब वो महाभारत लिख रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनका परशुराम जी से कुछ मतभेद हुआ था जिसमें दांत टूटा था। कुछ मानते हैं कि राइट वाला टूटा हुआ है। तो दांत का विषय ऐसा है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा आपको पूरा दिखाना है और कौन सा आपको टूटा हुआ दिखाना है। प्लीज डिसाइड योरसेल्फ which tooth you want to show broken one.
I hope you like my tutorial. Thank you for liking, subscribing, and sharing the information about my YouTube channel with your family and friends. Dhanyavad. Namaste.